था मैन वक्त पे। Okay, so today we are going to look at a new topic. So, till now we have been looking at supervised learning techniques. Today we are going to look at unsupervised learning techniques and to start with clustering. To recap, in supervised learning, the training set consists of the input and the desired output. Whether it is regression or classification problem, we have the training set consists of both input X and the desired output Y. For example, this is a classification problem where you want to classify into uh, two classes, and so we are provided with classes. For example, for this we have a class, and for this data set we have another class, and the idea is to then separate these two classes using supervised learning techniques that we have been looking at. So today the data set would only consist of the input X, and the objective is to find certain patterns, some hidden patterns in the data set. For example, one hidden pattern in the data set can be the groups, the clusters within present within the data set. Here, for example, I have two clusters, for example. So the idea of unsupervised learning is that you are given a data which consists of only X, and the objective is to find certain patterns, certain hidden structure which is present in the data set. And we are going to start with clustering. Okay, given a data set, we want to cluster, we want to group the data set into different groups, different clusters. And clustering has a lot of applications from market segmentation, social network analysis, organized computing clusters, and etc. For example, you have different clusters and you want to assign tasks to different uh, clusters. So based on how the clusters are and there may be depending on the data you want to then group them into different clusters and assign tasks accordingly. Similarly, you may want to do some analysis on a data set like this, a social media, social network analysis, where you again maybe want to partition or divide or group the your network into different parts. So all these are applications of clustering. The algorithm that we are going to look at is called k-means clustering algorithm. And the idea is very simple. So let's actually look at the intuition or the idea, and then we are going to look at its detail. So let's say we are provided with some data set here, a 2D data set. So for each point we have the two features x and y, that we have plotted them here. And let's say we want to group them into two clusters. So this is provided to us that we want to group them into two clusters or two groups. We are going to start off by randomly choosing 2 points. Let's say we have chosen these 2 points as the center, as the centroid of the two clusters. The next step is to measure distance from each data point to these two cluster centers. For example, let's look at this data point here and this one, and we measure the distance to this cluster. Okay, let's call this distance d1. Similarly, we measure the distance to the other cluster, and let's call it d2. And depending on the values d1 and d2, we are going to assign this data point to either the red cluster or the blue cluster. So here we can see that d1 is shorter than d2, so we are going to assign this data point to the blue cluster here. Okay, and similarly we are going to do that for all the data points. तो ये हमने जितने भी data points हैं इन सब के लिए जब कर दिया, so we would have divided our data points into two groups. The groups will not be accurate, but for the time being, let's say these are the two groups now. Okay, based on the distance to the randomly initialized centroid positions. Okay, so once we have done up to this, the next step is now to look at all the data points that belong to the red cluster.
and take the mean or the average. Okay, and that is going to update my center cluster, the center of the cluster. Similarly, I'm going to do the same for the blue cluster. Okay, I'm going to do the same for the blue cluster, compute the centroid and update the centroid. So as a result of that, my centroid would change. So these are the new centroids, the new center position. Okay. The next step is again जो हमने पहले जो step किया था कि from measure distance of each data point to the two cluster centers. तो अभी दोबारा से हमने वही काम करना है कि यहाँ से इसका distance compute किया, compute this distance and assign data point to the cluster to which it is closest and do that for all the data points. As a result, there will be some changes. कुछ points का changes नहीं होंगी, वो उसी cluster को assign रहेंगे. कुछ points they will change assignment क्योंकि अभी आपके cluster center भी change हुए थे. तो this is how, sorry, ये आपके कुछ पॉइंट जो हैं, these are the few point जो जिनकी cluster assignment change हो जाएगी. तो after that again I'm going to repeat that step के दोबारा से मैं जो red points हैं उनको देखूंगा, उनका average compute करूंगा और अपना जो centroid location है उसको location change हो जाएगी, update हो जाएगी for both the blue group cluster and the red cluster. ठीक है, that is how things will change. Okay, ये old location है and this is the new location, new center location of the two centroids. सर ये जो क्लस्टर पॉइंट्स हैं इनको हम रैंडमली चेंज करेंगे या किसी क्राइटेरिया के तहत चेंज हो रहे हैं क्लस्टर सेंटर्स? क्लस्टर सेंटर देखें, हमने दो स्टेप्स डिस्कस किए हैं यहाँ. स्टार्ट ऑफ हमने किया इनिशियल पॉइंट से, ठीक है. उसके बाद हमारे दो स्टेप्स हैं जो कि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं. द फर्स्ट स्टेप इज के फ्रॉम एवरी पॉइंट कंप्यूट डिस्टेंस टू द सेंट्रॉइड और उस डेटा पॉइंट को फिर डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस असाइन कर देंगे या रेड को या ब्लू को. तो वो पॉइंट है आपका ये, या तो आपने ब्लू को साइन कर दिया, रेड को साइन कर दिया बेस्ड ऑन द डिस्टेंस. ठीक है, दिस इज स्टेप नंबर 1. Step number 2 is to then look at all the points that have been assigned to the red cluster and update the mean, update the center location. अब देखिए यहाँ तो ये तो previous location थी. अब जब आपने assign कर दिए points red cluster को, तो इन जितने भी red points हैं इनका जब आप average compute करेंगे तो आपकी जो location है इसकी ये change हो जाएगी. Maybe it will move somewhere here. Similarly जो blue centroid location है जब एवरेज कंप्यूट करेंगे ऑल द ब्लू पॉइंट्स का, तो दिस विल आल्सो चेंज, मे बी इट विल मूव अप टू हेयर. ठीक है, तो इस लिहाज से ये आपकी ये लोकेशन चेंज हो गई है. तो ये दिस इज द क्राइटेरिया. और ये दो स्टेप्स हैं 1 एंड 2 जो मैंने मेंशन अप किए हैं, ये आप बार बार रिपीट करेंगे. अब फिर से आप स्टेप 1 रिपीट करेंगे जिसकी वजह से आपकी क्लस्टर असाइनमेंट अपडेट होगी. ओके, फॉर ईच डाटा पॉइंट यू विल measure distance to the centroid and assign the data point depending on the distance to the closest centroid. सर शुरू वाले जो 2 पॉइंट्स हैं वो हम कैसे लेंगे? वो रैंडमली हमने इनिशियलाइज किए. सर जितने शुरू में हमने कहा था कि रैंडमली चूज दीज 2 पॉइंट्स. सर जितने हमारे पास क्लस्टर्स हमें एक्सपेक्टेड होंगे या हम उनको डिवाइड करना चाहेंगे, हम उतने पॉइंट्स लेंगे. हाँ, अगर आपको कहता हूँ 3 करने हैं तो आप 3 पॉइंट्स में भी तीसरा यहाँ पॉइंट ले लें. 4 करने 4 यहाँ ले लें. ठीक है, रैंडमली आपने 4 पॉइंट डिपेंडिंग कितने क्लस्टर्स बनाने हैं उतना आपने स्टार्ट किया उतने क्लस्टर से, रैंडमली इनिशियलाइज्ड. ठीक है. So these two steps, the step 1 and step 2, you are going to iterate one after the other. और एक स्टेप में आपकी क्लस्टर असाइनमेंट अपडेट होगी, दूसरे स्टेप में आपका जो सेंट्रॉइड लोकेशन है वो अपडेट होगी. एंड फाइनली यू आर गोइंग टू कन्वर्ज टू दिस सिचुएशन कि नाउ इफ यू try to repeat step 1 and step 2, things will not change क्योंकि आपका जो एल्गोरिथम है it has converged. Now even if you run step 1 again, the cluster assignment will not change, neither will the center of the cluster, the center of the cluster will change. Okay,
So at that point, you will know, okay, your solution or your algorithm has converged. You need to stop now. So this is the final solution or this final cluster that you have. And these are the cluster location centroid, जो के centers हैं. And then these data point belong to one cluster. This data point belong to the other cluster. जिसका centroid location ये है. ठीक है? So this is very simple algorithm. The input to the algorithm is the number of clusters. So you have to tell the algorithm K how many clusters I want the cluster. The algorithm K means algorithm does not have a mechanism to determine automatically कितने clusters आपके optimally होने चाहिए. You have to tell that. So this is the first input. The second input is of course the data points जिन पे आपने algorithm run करना है. And this is your algorithm pseudocode of that. You randomly initialize K cluster centroids. So if you want to group into K clusters, you will initialize with K centroids, randomly chosen. Okay? And then you're going to repeat these two steps. This is step number 1, जो मैंने पहले mention किया था. This is step number 2. And you're going to repeat that one after the other. Step 1 is basically the cluster assignment. For each data point, you measure distance to these cluster centroid. Okay, for example, for I goes from 1 to M. So M are the total number of data points. So for each data point, you need to assign it to one of the clusters. For example, let's take the example कि अगर आपके पास 2 ही clusters आपने बनाने हैं, तो each data point would be either assigned to C I would either belong to 1 or 2, depending on कि cluster 1 से belong करता है या cluster 2 से. So for each data point, you need to have you want to assign it to either 1 or 2. So Ci is the assignment of the data point I to either cluster 1 or cluster 2. Okay, so this you have to do in step 1. Similarly, once you have done that, step 2 is simply कि जो points cluster 1 को let's say assign हुए हैं, उनका आपने average compute करना है. जो points cluster 2 को assign हुए हैं, उनका average compute करना है. And update the mean, the centroid based on the average. So for K 1 to capital K, which basically means जितने आपके clusters हैं, 2 clusters हैं, तो दोनों का आपने average compute करना है and update your clusters. Again, go to step 1, update your cluster assignment. Move to step 2, update centroid, and keep on doing that until you converge. Okay, any question? So what is the function that we are trying to minimize, or what is the objective function which k-means tries to optimize? Remember, in all our previous algorithm, we had some cost function जिसको हम minimize करना चाह रहे थे. So what is the cost function here that we want to minimize? So before looking at that, let's look at certain notations जो हम पिछले slide में भी थी. C superscript I is an index of cluster 1 to K to which the xi example is assigned to. For example, अगर आपके पास data points हैं x, let's take the example के 4 data points हैं, only 4 example data points, then you have C1 which is where to what cluster has the first data point been assigned to. ये किसको assign हुआ है, C3 किसको assign हुआ है, C4 किसको assign हुआ है. Maybe if you only have 2 clusters, then maybe C1 is assigned to 1, C2 is assigned to 1, C3 is assigned to 2, and C4 is assigned to is equal to 2, which means कि ये इनको assign हुआ है. So C is denoting the index of the cluster to which this example has been assigned to. Similarly, you have mu k, which is the location of the centroid. So in this example, we only have 2 centroids. So mu1 is the location of the first centroid, mu2 is the location of the third centroid. Then we have another notation, which is basically Ci, which is simply the centroid, either mu1 or mu2, to which data point x has been assigned to. Okay, so this is simply a notation just to
कीप ट्रैक के जो आपका डाटा पॉइंट एक्स आई है वो कौन से सेंट्रॉइड को असाइन हुआ है. इट वुड इधर बी असाइन टू, इफ यू आर टेकिंग एग्जांपल के दो क्लस्टर्स हैं, टू इधर mu1 और mu2. तो दिस वुड इधर बी mu1 और mu2 डिपेंडिंग के आपका जो आइस डाटा पॉइंट है वो mu1 को असाइन हुआ था या क्लस्टर 1 को असाइन हुआ था या क्लस्टर 2 को असाइन हुआ था. So this is simply your centroid indicating that. Now, given these three notations, what is the objective function that you are trying to minimize, or the K-means algorithm is trying to minimize? So what we are trying to minimize, let's go back here in this example. We are trying to minimize this distance. कि अगर ये point इसको assign हुआ है, तो ये distance है, ये कम हो, अगर otherwise हम इसको इधर assign कर देते हैं. लेकिन चूंकि ये distance ज़्यादा था इसलिए हमने इसको इधर assign किया है. ठीक है? तो if we look here, let's say that this is my data point xi, and this has been assigned to this centroid. So xi minus the centroid to which this I data point has been assigned to. ये मैंने distance compute किया इसका. Okay, उसका this is the distance and then the square. और इस सब को मैंने this I have to do for all the m points. So this is the distance that I am trying to minimize, or this is the cost function that I am trying to minimize, right? So this is the objective function for, in the case of the K-means algorithm that it tries to minimize. Okay, and subject to these two things, it has to assign जो आपका जो cluster assignment है वो, and as well as the centroid location, वो इस तरह का चूज करना है कि आपकी ये डिस्टेंस जो है या ये जो कॉस्ट फंक्शन है ये मिनिमम हो. Okay, so this is the objective function it is trying to minimize, and the algorithm to do that is, you know, written here. आपने दो चीजें सब्जेक्ट दो आपके मिनिमाइज तो अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन करना है, ये आपने दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू मिनिमाइज. ठीक है, and this subject to two things. One is कि what is the assignment, ऐसी होनी चाहिए कि आपका ये मिनिमम हो. सेकेंडली सेंट्रॉइड लोकेशन. तो इन दोनों ये दो चीज़ें फाइंड करनी है ऐसी कि आपका ये मिनिमम हो जाए कॉस्ट फंक्शन. ऑफ कोर्स यू हैव टू देन देयर इज नो ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन. द वे यू डू इट इज के फर्स्ट टाइम आप एक को फिक्स करते हैं. जब आप ये कंप्यूट करेंगे यू गोइंग टू अज्यूम कि आपका जो सेंट्रॉइड है वो फिक्स्ड है. बेस्ड ऑन दैट यू गोइंग टू फाइंड द असाइनमेंट. once you have done step 1, then you're going to assume case assignment is now fixed. Now you want to compute the centroid. ठीक है, तो इस लिहाज से ये ऑल्टरनेटिवली आप एक दोनों चीज़ों को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे या चूज करने की कोशिश करेंगे इन सच अ वे कि आपका जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है दिस वन इट इज मिनिमाइज्ड. या देयर वाज सम क्वेश्चन. यस सर, हमें मिनिमाइज करते वक्त सिर्फ उस क्लस्टर के जो पॉइंट्स हैं उनसे उसका डिस्टेंस मिनिमाइज ये करना होगा, अगर वो उससे मिनिमाइज हो जाता है. जी हाँ, देखें आप कॉस्ट फंक्शन में अगर नोट करें तो फॉर डाटा पॉइंट एक्स आई आप वही क्लस्टर पिक कर रहे हैं जिसको टू विच इट हैज़ बीन असाइंड टू, उसी की लोकेशन सेंटर लोकेशन से आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं. तो ऑफ कोर्स इन ईच स्टेप इट इज़ गोइंग टू चेंज. ये तो आपका फाइनल जब आपका कन्वर्ज सोल्यूशन है तब आप ये फाइंड कर रहे हैं, लेकिन टू स्टार्ट विद इट विल हैव सम हाई वैल्यू और वो सही असाइनमेंट इनिशियली नहीं होगी तो यू विल गेट हायर वैल्यूज. लेकिन जैसे जैसे आपका एल्गोरिदम जो है वो कन्वर्ज करेगा दिस cost function would decrease and finally it is going to converge to a final solution. Okay. Okay, to summarize, we have discussed K-means algorithm. This is its pseudocode. We randomly initialize K points, and then we repeat these two steps for number of iterations depending either we specify एक set number of iterations के let's say आपने 1000 iterations करनी है या depending on your data set, or we also have some convergence criteria कि if your
cluster assignment is not changing or your centroid location is not updating, it means that your algorithm has converged. So up till that time, you repeat these two steps. In the first step, you assign data points to either one cluster or the other cluster, or depending on the number of clusters. And once you do that, in the second step, you update the centroid locations, and then you repeat the step one, step two, one after the other. What this algorithm is doing is it is minimizing this cost function subject to the cluster assignment and the cluster centroids. Now, let's discuss some practical problem that you encounter while running machine this k-means algorithm. पहली practical example तो हम already शायद discuss कर चुके हैं कि how to start with the algorithm, क्योंकि आपने you have to start from some position, some centroid location, उसके बाद फिर step one, step two आपने repeat करना है. What is the best way to start, or will your final solution depend on the initial clusteroid that you started with? And the answer is yes, it does depend on the initial starting position, and that is why k-means algorithm is not a globally optimal solution, which means depending on the initial centroids, you may end up getting different final solutions. For example, let's say these are three clusters, and for some centroid location you get these three clusters, but it may happen that you start off with a different values and you end up getting, you know, this as your final solution. Okay, and you may end up getting this as your final solution. So your starting location is very important, and k-means algorithm is only going to give you locally optimal solution. Locally optimal means that your cost function, this is your cost function, this is not convex, and the reason is it depends on two things. एक तो cluster assignment पे भी depend कर रहा है, secondly it is also depending on the centroid, और वो दोनों चीजें आप change कर रहे हैं one after the other, and due to that your cost function, it is it has multiple minimums, और depending कि आप कहाँ से initial start कर रहे हैं, you are going to find the locally optimum solution. ठीक है, जैसे यहाँ हमने एग्जांपल में देखा कि you found with three different initialization, you found three different solutions. So how to then go about it? क्या करना चाहिए? How to choose the right initial starting point? Yeah, is there a way to do that? Unfortunately, there is no such way कि जो आपको बताए कि initial value क्या बेहतर है. So the only option left is you try multiple things. Okay. So this is what you do. You maybe repeat this k-means algorithm 100 times. You randomly initialize k-means algorithm, run k-means algorithm to get the cluster assignment and the centroid, compute the cost function. So this is the cost function that you have to compute, which is basically, you know, this thing that we had before. I goes from 1 to m minus ci square, and you compute this cost function for all these 100 runs, और in 100 में से आपने वो चूज करना है जिसका cost function ये सबसे lowest होगा, and that you then go with that solution. For example, इस case में we have run the algorithm three times. We got some cost value here, some cost here, some cost here. This would be the lowest cost, so we are going to go with this solution. ठीक है? So that is how you run the k-means algorithm. And usually it's better to, instead of choosing random values, what you do practically is let's say if you're given these data points and your objective is to divide it into 2 points, then instead of randomly choosing 2 points and start from there, what you instead do is randomly pick 2 data points. Okay, so maybe you pick this as one data point, this as the other data point, or maybe in another run you pick this dot as one data point, a center point, this one as second center point.
and you do that multiple times and then choose the one which gives you the minimum or the lowest cost. Okay, otherwise if you randomly pick a point, then you do not know, maybe you pick a point here somewhere really far, तो उससे बेहतर है कि instead what you do is you pick one of the data points as your center location. अगर आपने let's say 3 clusters बनाने हैं, you randomly pick 3 clusters, cluster center positions, and you do that multiple times, और फिर जो बेहतर उसमें से solution आएगा depending on the cost, वो आप pick कर लें. Okay, any question from this part from random initialization and how to do that? सर वैसे भी ये लग रहा है कि ये अच्छा खासा कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव एक एल्गोरिदम है. अगर हम इनिशियल पॉइंट भी ज़्यादा लेके चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा उससे. जी हाँ, this unfortunately you have to do that, otherwise you may not get the right clusters. Okay, ये एक practical problem थी. What can be the other practical problem? And maybe this slide should give you some hint to the other practical problem. So these are the inputs to the K-means algorithm. एक तो है training data, एक है आपका number of clusters. सर अगर एक क्लस्टर के बहुत थोड़े पॉइंट्स हों या एक के बहुत ज़्यादा हों. ठीक है. So you refer to the right problem, to the problem which of the choosing the number of clusters. If you choose too many, if you say give me 10 clusters और data set आपका उस तरह का ना हो, उसमें clusters ही 5 बनते हो naturally, लेकिन आप कहते हैं मुझे 10 चाहिए, या data set में ज़्यादा clusters और आप specify करते हैं मुझे कम चाहिए, तो the K-means algorithm will try to do the best it can with those number of clusters जो आपने कहे हैं उसको, but how to choose the best, the ideal or the optimal number of clusters जो एक problem या एक data set के लिए the right amount हो number of clusters की, उसके लिए हमें जो एक certain guidelines हैं हम वही discuss करेंगे कि and choosing the number of clusters. Okay, now how, let's say from ये अगर problem है इसमें what is the good number of clusters, क्या you know 2 होने चाहिए, 4 होने चाहिए. Okay, so these are all open questions, and K-means algorithm itself does not provide you answers to that. It is simply going to take a value, a number as input, or depending on that is going to divide or group your data points into that many clusters. So the way we actually choose number of clusters is using this elbow technique. And what is this elbow technique? What we do is कि हम try करेंगे मुख्तलिफ clusters, just like multiple initialization, जहाँ भी हमें we will have to try multiple clusters. So the first question is कि if you start off, let's say कि you have 8 data points. ठीक है, let's say कि these are 8 data points, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो let's say initially we start off with just one cluster. हम कहते हैं कि जैसे we want one cluster, तो एक ही cluster है, उसमें all the points will belong to that cluster, or we are going to get some cost function, so some cost value. What is the cost value? It is simply from each data point we subtract we compute the distance to the centroid, और इस केस में चूंकि है ही एक ही centroid, तो वही जो सेंटर लोकेशन है जो आपने प्लस मैंने ड्रॉ की, दैट इज योर सेंट्रॉइड, उससे हम कंप्यूट करेंगे डिस्टेंस and do that for all 8 points, and we're going to get some distance, let's some cost, maybe somewhere here. Okay, now let's say instead of one cluster we choose 2 clusters, so maybe एक cluster आपका ये आ गया, एक cluster ये आ गया. ठीक है, centroid location बात कर रहे हैं. So what will happen to the cost? Will it decrease or will it remain same? Will it increase? What will happen? So increase.
What is the cost? Cost is basically this distance. Let's say कि ये 4 पॉइंट्स इसको असाइन हुए हैं, बाकी जो 4 पॉइंट्स थे ये वाले ये इसको असाइन हो गए हैं, ठीक है। ये आप इस तरह ये आपने डिस्टेंस ऐड करके आपने कंप्यूट कर लिए कॉस्ट। तो जो पहले एक क्लस्टर था उस टाइम पे आपकी कॉस्ट थी वो, और अभी जो कॉस्ट है इनमें ज़्यादा कॉस्ट किसकी है, 1 क्लस्टर के केस में या 2 क्लस्टर? ठीक है, ऑफ कोर्स 1 में ज़्यादा कॉस्ट थी क्योंकि उसमें सेंटर लोकेशन में आपका था सेंट्रॉइड और डिस्टेंस फ्रॉम ईच पॉइंट वाज मोर देन नाउ। अभी आपके जो सेंटर है वो इट हैज़ मूव लोकली, तो डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया, तो द कॉस्ट हैज़ एक्चुअली डिक्रीज, तो इस तरह हो गया। Similarly, if you now make 3 clusters, so the cost will further decrease, and eventually it may happen कि अगर आप 8 clusters बनाएं तो your 8 data points ही आपके 8 clusters बन जाएं और distance बिल्कुल जो आपकी cost exactly 0 आ जाए, ठीक है। but you know that is not the right solution कि आप 8 ही data points और 8 ही clusters तो नहीं होंगे, but the cost will decrease, right? So in general, given a data set, when you plot the cost function with respect to the number of clusters, you're going to observe के up till a point, maybe इस केस किसी एक केस में up till के जब तक आपने 3 clusters यूज किए, the drop in the cost was really high, the rate of change or the gradient was really high. After that जो है आपका cost flattens out, I mean cost भी decrease होगी लेकिन the rate at which it is decreasing will decrease. तो दिस इज यूजुअली व्हाट हैपेंस कि दिस इज व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि आपके पास एक जगह आएगी जहाँ जिस जगह पे इसको हम एल्बो कह लें कि द रेट ऑफ चेंज बिफोर एंड आफ्टर दैट विल बी डिफरेंट। तो दैट इज द आइडियल वैल्यू फॉर द नंबर ऑफ क्लस्टर्स। ये जो एल्बो आपका बन रहा होगा इसको आप चूज करेंगे फॉर योर डाटा पॉइंट्स। Okay, just give me a minute. ठीक है, तो दिस इज द एल्बो मेथड which is used to determine number of cluster, the ideal number of clusters. Usually you will observe in different problems कि this is the way you are going to see this the curve कि जैसे जैसे आप clusters को बढ़ाएंगे there will be drop in the cost function. After certain number of clusters जो drop होगा वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, so you know at that point कि अगर drop ज़्यादा नहीं हो रहा then that is the number of you have achieved the number of clusters जितने होने चाहिए इस problem के, ठीक है। Okay, so with that we finished this lecture. So what we have done today is we have looked at clustering algorithm, which is unsupervised learning algorithm, and the objective in this is given data set we want to cluster or group our data points into different groups, different clusters, and the algorithm that we looked at was K-means algorithm, and it's an iterative algorithm जिसमें 2 steps हैं that you repeat one after the other. The first step is the cluster assignment, and the second step is basically the centroid update, ठीक है। इसको अब आप रिपीट करते हैं। There are 2 practical problems जो हमने डिस्कस की हैं random initialization की, and we said कि there is no way to determine what is the best starting location to start with. तो इसलिए what we want to do is कि we are going to run this algorithm multiple times and then choose the best based on the cost function. The second problem again जो हमें आती है वो number of clusters की आती है। उसके लिए भी we have this method elbow method जिसमें simply we are going to start off looking at different number of clusters, and depending on this curve कि जहाँ आपको elbow location मिलती है you are going to determine कि this is the ideal number of cluster for that data point that you have, ठीक है। सर प्रैक्टिकल सिनेरियो में हमें पता होगा कि हमें कितने क्लस्टर्स चाहिए मोस्टली। प्रैक्टिकल सिनेरियो में आपको नहीं पता होता, किसी केस में भी आपको पता भी हो लेकिन यूजुअली यू डू नॉट नो। अगर पता है ठीक है, बट इन मोस्ट केसेस यू डू नॉट नो हाउ मेनी क्लस्टर्स
आपको होने चाहिए आप डाटा पॉइंट में, ठीक है। मे बी इन सम प्रॉब्लम आपको पहले से आइडिया हो कि इसमें 2 क्लस्टर्स हैं एंड देन यू स्पेसिफाई दैट, तो वो तो ठीक है, लेकिन इन जनरली यू डू नॉट नो गिवन अ डाटा सेट इसमें कितने क्लस्टर्स होने चाहिए। तो अगर नहीं पता देन दिस एल्बो मेथड इज वन ऑफ द टेक्निक्स टू डिटरमिन द नंबर ऑफ क्लस्टर्स। Okay, next we any question before we move forward? Actually, the next two problem that we are going to discuss is what is the so ये तो हमने दो बात की, दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो हमने डिस्कस कर ली, एक दो रैंडम इनिशियलाइजेशन की और नंबर ऑफ क्लस्टर्स की, बट देन देयर आर सर्टेन शॉर्टकमिंग्स ऑफ के-मींस एल्गोरिथम आल्सो। वो शॉर्टकमिंग्स दो हैं, लेट्स डिस्कस दोज एज वेल एंड वी आर गोइंग टू एक्चुअली डिस्कस देम अगेन जब हम उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ वो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और उसका सोल्यूशन क्या है वो हम लेटर ऑन अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ के मींस इज कि के मींस अज्यूम्स के जो आपका क्लस्टर्स हैं दे आर स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिकल का मतलब ये है कि अगर आपका सेंटर लोकेशन ये है देन योर क्लस्टर्स दे हैव अ स्फेरिकल शेप, क्योंकि व्हाट ऑल यू आर केयरिंग अबाउट या जो आपका कॉस्ट फंक्शन भी है it is simply something like this, you simply compute the distance from the center location, ठीक है। तो उसमें you do not care कि आपका डाटा सेट जो है वो अगर एलिप्टिकल शेप में है तो whether that is उसका एलिप्टिकल शेप होना चाहिए, उसका क्लस्टर का नहीं होना चाहिए। K means will assume कि it is spherical, so that is why if your data set is in such a way कि वो उसकी डाटा सेट की शेप क्लस्टर स्फेरिकल है, लेट्स से आपका डाटा सेट एक है, वो आपके पॉइंट इस तरह के हैं, ठीक है। लेट्स से ऑल दीज आर पॉइंट्स मे बी इलेक्ट्रिकल शेप में, और इस तरह आपका एक और क्लस्टर है उसकी भी उस तरह की शेप है। तो जो अभी इसमें जो क्लस्टर्स बनते हैं आइडियली तो होना ये चाहिए कि आपके पास एक क्लस्टर ये बन जाए, एक क्लस्टर ये बन जाए, लेकिन चूंकि के मींस एल्गोरिथम अज्यूम्स ए स्फेरिकल क्लस्टर और वो जो क्लस्टर भी बनाता है इट हैज स्फेरिकल शेप, तो इस तरह की सिचुएशन आपको नहीं मिलेगी। मे बी इट गिव्स यू क्लस्टर जो कि इस तरह के दो क्लस्टर बना के दे दे। ओके, so this is the shortcoming of K-means algorithm, that if your data is not, if your clusters are not spherical, your K-means algorithm is not going to give you a good solution, ठीक है। तो ये तो एक आपका प्रॉब्लम आ गया। द सेकेंड प्रॉब्लम इज द हार्ड क्लस्टर असाइनमेंट। K-means algorithm assigns each data point to one of the many clusters जितने भी आपने स्पेसिफाई किए हैं, बट यू विल सी के लेट्स से इसी एग्जांपल को देख लें कि लेट्स से दिस इज वन क्लस्टर, दिस इज अनदर क्लस्टर, ठीक है। अब एक डाटा पॉइंट है जो मैंने ड्रॉ किया है क्रॉस मेथड, K-means is going to assign it to the cluster 1, but you can know that it lies at really at the boundary, ठीक है। जो पॉइंट्स इंटीरियर में लाई करते हैं उनका तो आप 100% श्योर है कि दे बिलोंग टू दैट क्लस्टर, बट मे बी दिस पॉइंट इंस्टेड ऑफ असाइनिंग इट अ हार्ड वैल्यू कि ये क्लस्टर 1 से बिलोंग करता है, मे बी इट इज बेटर कि यू असाइन इट सम सॉफ्ट वैल्यू कि विद दिस प्रोबेबिलिटी, मे बी विद 0.1 प्रोबेबिलिटी इट बिलोंग्स टू क्लस्टर 1 एंड विद दिस प्रोबेबिलिटी इट बिलोंग्स टू क्लस्टर 2। that may be a better way to tell how much confident you are in it, in this data points assignment to different cluster. तो this is also shortcoming of K means के वो आपको hard assignment देगा but no confidence interval या no a measure of confidence के how much confident it is या how much कि क्या वो बाउंड्री पे लाई करता है, पेरीफेरी में है, इंटीरियर में है। तो दिस information is not provided by the K-means algorithm. So so it's better maybe if we get this extra information also in terms of probability के एक data point how much probable is it that it belongs to the two cluster, one of the two clusters, ठीक है। So these two shortcomings, एक तो है K-means assumes spherical clusters, and so if your data point or data set is not in that way, you have a problem. The second is hard cluster assignment, that is also a shortcoming of K-means algorithm,
The solution to these two problems is coming up in the next coming lectures, and so basically it is the Gaussian mixture model जो हम बाद में देखेंगे, but not today. For today, any questions? We have, to summarize, we have discussed K-means algorithm and its algorithm, its cost function, some practical issues and its shortcomings.